हे हि गौरी सपिनाकपाणे शशाङ्कमौले वृषभाधिरूढ देवादिदेवे समहेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हसितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं न याति। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्रद्धेय भक्तजनहरू, वाङ्मय नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको बसाइमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा जुन स्कन्द पुराण अन्तर्गत उल्लेखित भएको सुन्दै सुनाउँदै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीले नेपाली भाषामा उल्लेखित कथा श्रवण गर्दै आइरहेकै छौँ। यस बसाइमा म यहाँहरूलाई संस्कृत भाषामा रहेको संस्कृतका वाङ्मय मूर्ति स्वरूप रहेको स्वस्थानी कथालाई यहाँ पाठ स्वरूप प्रस्तुत गर्नेछु। पक्कै पनि यहाँहरूलाई यहाँका हरेक अक्षरहरूले पुण्य आर्जन गर्नमा सक्षम बनाउनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अब सुरु गरौँ संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध भएको स्वस्थानी व्रतकथा। सबैभन्दा पहिले स्वस्थानीको पुष्पाञ्जलि प्रार्थना। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्री स्वस्थानी कथा प्रारभ्यते। ओम कैलासशिखरे रम्ये नानाधातु प्रशोभिते कल्पवृक्षोद्यानयुक्ते कामधेनु विराजिते चिन्तामण्यत्रिसंयुक्ते
अष्टसिद्धिसमन्विते सुखासीनं जगन्नाथं ज्ञानमुद्रायुतं शिवं ब्रह्मेन्द्र विष्णुभिर्वन्द्यं सौम्यरूपधरं पतिं प्रणम्य शिरसा पृच्छत् पार्वती परमेश्वरी। पार्वत्युवाच भक्तवत्सल सर्वज्ञ देवदेव जगत्पते ब्रहि मे परमेशान व्रतं त्रैलोक्यदुर्लभं को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमो मतः सुरासुरास्तथा नागा महाचार्यास्तया सुराः भ्रातरो विविधा सन्ति तथान्ये विविधा नरा यद् वैदव्यहरं पुण्यं स्वस्थानमस्ति हेतुकम्। महादेव उवाच साधु साधु महादेवी यत्त्वयाहं प्रबोधित संक्षेपेणे च वक्ष्यामि बहुरथं व्रतमुत्तमं। माघस्य पूर्णिमायां तु स्वस्थानी व्रतमाचरेत् आवयो पूजयेत् तत्र प्रतिमा मण्डले शुभे चन्दनाक्षतपुष्पादि गृहीत्वा ध्यानमाचरेत् सुवर्णवर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासनसमासीनां सर्वालङ्कारभूषितां खड्गचर्मधरां चाथ वामदक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजां च तत्रैव पूजयेत् वृषकेतूनां नीलोत्पलाभै वामे वरशूले च दक्षिणे एवं ध्यात्वा महादेवी अर्घ्यं चाथ प्रदापयेत् अष्टोत्तरशतैः पुष्पैः फलधूपान्नचन्दनैः पूजयद् वै महादेवो जगतः परमेश्वरो ततो गोधूमचूर्णेन सतिलेन गुडेन च गर्भं कृत्वा च पक्तव्यं सर्पिषाष्टोत्तरं शतं पूपकं परमेशानि तद्वै भक्त्या निवेदयेत् ततोष्टपूपं संगृह्य शुक्लवस्त्रेण वेष्टयेत् पीतसूत्रेण सम्बध्य पूजयेत् पतिबुद्धिना पत्ये दद्यात् भक्षणाय तद्यद्वा मित्रपुत्रयोः एतान्न लभते या च सा नद्यां वाहयेत् ध्रुवं प्रदक्षिणे कृत्य ततो यावां वै श्रद्धयान्विता ब्राह्मणान् भोजयित्वा च दक्षिणां च प्रदापयेत् स्वयं शतं च भोक्तव्यं रात्रौ जागरणं चरेत् ततो विसर्जनं कृत्वा जले स्तन्मण्डलं क्षिपेत् वर्षे वर्षे व्रतं कुर्यात् स्वस्थानी नामकं शुभम् एतद् व्रतफलं देवी संख्यातुं नैव शक्यते गोशतं च सहस्रं च परिष्कारविभूषितं कन्यादानन्नदानानां बाजीवारणकोटिश वस्त्ररत्नमहादानं तिलकाञ्चनमेव च राजसूयाश्वमेधाभ्यां यत्फलं समवाप्यते तत्सर्वं समवाप्नोति व्रतेनानेन सुन्दरी व्रतानां च शिरोरत्नं स्त्रीणां चैव विशेषतः त्रिवर्गं च समालभ्य प्राप्यते परमागतिः इत्येतद् कथितं देवी किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। पार्वत्युवाच तत्कथां श्रोतुमिच्छामि सर्वचेतुरमा शुभां कथयस्व महादेव यदि योग्यास्ति मे प्रभो। सदाशिव उवाच साधुकृतं त्वया देवी यत्कथा श्रवणे मनः तव प्रीत्यै प्रवक्ष्यामि सावधाना शृणु प्रिये। पुरासिद् ब्रह्मपुर्यां वै शिवशर्मा महातपः षट्कर्म निरतो विप्र सर्वशास्त्रार्थपारग पूर्वजन्म विपाकेन न लभेत सन्ततिं द्विजः तस्य पत्नी सती नाम्नी नित्यं या पतिदेवता विषण्णा ह्यति दुःखेन पृच्छति ब्राह्मणी पतिं
आजन्म पापिनी काहं न जाने किं मया कृतं पुत्र पुत्री न मे किंचित वृथा जन्म गता मम भार्या वचनमाकर्ण्य पति स्वास्थ्यं न प्रापः एतस्मिन्नन्तरे काले जायापत्यो किलाग्रत तस्य पुण्यप्रभावेण तत्रैका गौ समागता गवातयोरग्रतस्तु गोमयं वै समुज्झितं समतपन्ना ततो दृष्टा कन्या रूपवती शुभा सर्वलक्षणसम्पूर्णा पत्यत्वेऽङ्गीकृता च सा धनधान्यादिसम्पूर्णा लक्ष्मीवत् प्राप्यतां द्विजः चकार शङ्खवाद्यादि मृदङ्गाह्लादमुत्सवं ददौ नाम यथा न्यायं गोमया भट्टिनी स अनेक पुण्यकर्माणि ददास्ति स चकारः प्रत्यहं वर्धते कन्या शुक्लपक्षे शशि यथा तत्पुण्यदर्शिता सर्वे त्रस्ता शक्रादयः सुरा कैलासं तु समागम्य मां सर्वं ज्ञाप्य तत्त्वतः अभयं च मया दत्तं गच्छ शक्र यथा सुखं शक्रस्थानमायातो मया ज्ञप्तो विचक्षणः तत्कालेऽहं महादेवी बभ्राम भूमिमण्डले कपालिवेशो भिक्षार्थं तद्विप्रद्वारमागतः डमरुं वादयित्वा च ययाचे विप्रमन्दिरे एतस्मिन्नन्तरे काले सा कन्या गर्भगौरवात् तच्च शब्दं न शुश्राव कुसुमे क्रीडति स्थिता श्रुत्वा माता तु तच्छब्दं शीघ्रं कन्यां जगादः दीयतां तत्करे पुत्री राशिरन्नस्य विद्यते मातृवचनमाकर्ण्य भिक्षां धृत्वाग्रतो गता भिक्षुरुवाच भिक्षुरूपक्रोधयुक्त शापं तस्यै ददौ तदा त्वद्भिक्षां नैव गृह्णामि शृणु ब्राह्मणकन्यके अशीति वयसा वृद्धा पतिस्तव भविष्यति इति शापं तस्य श्रुत्वा रुरोदातीव विह्वला धीमती जननी कन्यां सान्त्वयामास यत्नतः कालेनाल्पेन सा देवी गोमयोद्भव सुन्दरी गोमयेति च विख्याता भवत् सा दशवार्षिकी पतिं योग्यतरं तस्या गतो मार्गयितुं पिता द्विजो जामातृयोग्यो हि न प्राप्त शिवशर्मणा विश्रान्तसो गृहं प्राप्य शिवशर्मा सुदुःखित भिक्षुकस्य च शापेन दैवेन प्रतिपादित ब्राह्मणोऽतीव वृद्धस्य कन्यां याचितुमागतः जटालम्बित दीर्घांग कंपितश्चाति दुर्बल कुब्ज कुबेशो बधिर पश्चिमे वयसि स्थितः अन्यद द्विजस्य लाभेन तस्य शापभयेन च पूर्वशापं चानुस्मृत्य तस्मै दुहितरं ददौ कन्यादानं चकारासौ शुभलग्ने शुभे दिने ततस्तु शिवभट्टेन पालितो दुहितो पति कालेन ज्वरपीडार्थ शिवशर्मा दिवं ययौ तत्पत्नी पतिना सार्धं सतीत्वं च समागत गोमया चाति दुःखार्ता पतिना सह तिष्ठति क्लेशयुतातिमलिना भोक्तुं पातुं न विन्दति तस्यां तु गर्भसञ्जातो हर्षशोकविवर्धन सीमन्तो नयनं कृत्वा विप्र पुंसवनादिकम् एकमासावधिं कृत्वा भिक्षार्थं वृद्धब्राह्मणः पत्नीं प्रबोधयित्वा तु ततो देशान्तरे गतः सशीतज्वरपीडार्तो ममारारण्यके द्विजः गोमया ब्राह्मणी सा च निर्जने निजमन्दिरे स्थित्वा ग्राम्यजनेनैव पालिता पतिदेवता गोमया दशमे मासि शुशुभे तनयं शुभं
द्विजश्रेष्ठैस्तस्य नाम नवराजेति कीर्तितं याचितन्येन सा माता कारयामास सत्तमैः चूडाव्रत विवाहादि सर्वकर्माणि तस्य वै यौवनोद भेदवयसि नवराज द्विजोत्तमः वसन् गृहेति दुःखेन संयुतो मातृवत्सल मातरं परिपप्रच्छ षोडशाब्दोति साहसी पोम्ब तात्वस्ति क्व गता सत्यं कथय मामृषा इति पुत्रवच श्रुत्वा सा माता रुदति सती जगाद वचनं पुत्रं भर्तुश्चरित संयुतं त्वयि गर्भस्थिते पुत्र तातस्ते भिक्षितुं गतः क्व तिष्ठति न जानामि जीवितो वा मृतोऽथवा इति मातृवचो श्रुत्वा नवराजोऽति धार्मिक हम्बामाश्वासयामास हेतुभिः शास्त्रबोधितैः नवराज उवाच पितृद्देशे गमिष्यामि तवानुज्ञां विधाय च पुत्रस्य परमो धर्म पितृसेवा परो नहि जीविते वाक्यकरणात् क्षया हे भूरि भोजनाद् गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता एवं प्रबोध्य जननी मनुज्ञां प्राप्य सद्विज प्रबोध्य युवतीं भार्यां पाथेयं परिगृह्य च यात्रां स विधिना कृत्वा ततो देशान्तरे गत ग्रामाद् ग्रामान्तरं गच्छन् तातमन्वेषयन् द्विजः शुश्रावस ग्राम्यमुखात् निश्चितं पितरं स्मृतम् रुरुदातीव दुःखार्तो हातात जनकेति वै गंगातीरे ततो गत्वा चक्रे श्राद्धं विधानत अथ स्नुषा गोमयाया दुःखाद् पितृगृहं गता तदा सा गोमयोद्भूता ग्रामं तत्याज लज्जया वस्त्रहीनातिमलिना नदी निकटवासिनी एरण्यपादपाकिरणे त्रीडकुड्यान्तरे स्थिता क्रुद्रवान्नं सदा भुक्त्वा श्रुत्रकर्तन कर्मत कर्मणा साति दुःखेन साध्वी कालं न्यवर्तयत् तदा कैलासशिखरे लक्ष्मी गौरी सरस्वती सर्वदेवगणैर्युक्तं चक्रुस्तद्व्रतमुत्तमं तत्र मर्त्योपदेशार्थं स्वाश्रमान् नारदो मुनिः आगतस्य मया ज्ञप्तो गच्छ लोकहिताय वै एतद्यथा मर्त्यलोके सञ्चारे स्यात् तथा कुरु इत्याज्ञां स मुनिः प्राप्य गतवान् मर्त्यभिष्टपम् पृथ्वीमण्डलमध्येथ दरिद्रको भवेदिति चिन्तयामास तत्त्वज्ञ परोपकरणप्रिय गोपालं परिपप्रच्छ को दरिद्रः कैश्वरः गोपालस्तु ततो वाक्यमुवाच प्रान्तरे स्थित दुःखिनीनां न काप्यस्ति गोमयाया परा भुवि गोपालः वचनं श्रुत्वा गतस्तत्सन्निधौ मुनि ब्राह्मणीमाह्वयामास द्वारि स्थित्वा पुनः पुनः धर्मोपदेशं शृण्वस्ति स्वस्थानी व्रतमुत्तमं यथा विधानं वक्ष्यामि गोमये सद्व्रतं कुरु इत्युक्त्वा नारदो धीमानुवाच सकलं विधिं ततसानन्द संयुक्ता प्रणम्य मुनिसत्तमं तस्मै पीठासनं दत्त्वा संविश्य च गृहान्तरे आतिथ्यं तस्य वै कर्तुं मनसा परिचिन्त्य सा गृहे च नास्ति मे किञ्चित् किं करोमीति दुःखिता कर्तितं सूत्रमादाय ताम्बूलाय जगामः ताम्बूलं पुगसहितं गृहीत्वा गृहमागता तावदेव गृहे तस्य निधिं दत्त्वा गतो मुनिः ब्राह्मणी गृहमायाता न ददर्श मुनीश्वरं गृहसम्मार्जनं चक्रे विषादेन युता सती
भद्रपीठं समुत्थाप्य तत्र दृष्टो निधिस्ततः व्रतोपदेशमात्रं वै नायं दातुं मुनीश्वरः धर्मव्याजनिधिमपि मह्यं दातुं समागतः इत्यानन्देन मनसा जग्राह निधिमुत्तमम् ततसा तद्व्रतं चक्रे मुनिना विहितं यथा उपाष्टकं तु संस्थाप्य पुत्रागमनकाङ्क्षया स्वयं शतं सा बुभुजे सिताक्षीरघृतैर्युतं तद्व्रतस्य प्रभावेण रात्रौ तद्पुत्रागत आशीर्भिरर्चयामास शृणुनासौ नमस्कृता उपाष्टकं च पुत्राय ददौ सा गोमयोदभवा दत्तं पुपं सद्भुजे सिताक्षीरघृतैर्युतं परस्परकथां कृत्वा उभाभ्यां गमिता निशा प्राप्तस्ततः सा जननी नवराजमुवाचः गङ्गातीरे हि गत्वा त्वं स्नानं कुरु च पुत्रक ततो विश्वेश्वरं देवं ध्यानेन परिचिन्तय इति मातृवचः श्रुत्वा कृतगङ्गाप्लवो द्विज कृत्वा विश्वेश्वरीं पूजां महास्तोत्रमुवाचः यं वै वेदो वेदनो नैव विष्णुर्नो वा वेदा नरसयो नैव वाणी तं देव सम्मादृशकल्पबुद्धेर्यथार्थ्यद्वै वेत्यहो विश्वनाथम् श्रुत्वा स्तोत्रमिदं तुष्टो जगाद परमेश्वर कालान्तरे च ते राज्यं नवराज भविष्यति इत्युक्त्वा गोमया सूनुर्मन्त्रधानं गतः शिव ब्रह्मणोऽपि वरं प्राप्य जगाम स्वनिकेतनम् एतस्मिन्नन्तरे काले लावण्याख्यपुरीश्वर व्रतकालवशेनैव राजा पुत्रादिवर्जितः तस्मिन् देशे गजेन्द्रेण कश्चिद् राजा विधीयते इति श्रुत्वा देशदेशादागत लोकपङ्क्तयः वस्त्रालङ्कार सम्पूर्णा नानाशोभा समन्विता स्थिता लावण्यपथ्यासु राज्यलोभेन वै नरा गोमया शापि लोभेन सपुत्रा स्वगृहाद्ययो सपुत्रा लज्जया सा वै सन्तस्थो गृहकोणत सजलं स्वर्णकुम्भं च गृहीत्वा राजमार्गत तेषु सर्वेषु तिष्ठत्सु गजेन्द्रोन्वेषयन् नरान् गृहकोणगतः सो वै नवराजसमात्रिक स्नापितस्तज्जलेनैव शस्कन्धे स्थापितस्तदा राजगृहं सनीतस्य दोलया तत्प्रसूरपि पुरोहितादयः सक्रु सर्वे तस्याभिषेचनं वीणामृदङ्गपटः शङ्खदुन्दुभिनिस्वनैः लाजपुष्पादिसिन्दूरैः युक्तं प्राप्य महोत्सवं नवराजोऽति वरिष्ठ सिंहासनगतः प्रभु मातरं परिपप्रच्छ प्रिया मे क्व गतेति वै स्वस्थानीं सा न जानाति सर्वकष्टविनाशिनीं तत्प्रसादेन भूपोऽहं जातो वै तत्प्रभावत महद्दुःखं त्वया प्राप्त मृत्युक्त्वा मातरं प्रति प्रियायै प्रेषयेद्दोलां गतास्तस्याज्ञया जनाः ददृशस्तां स्त्रियं ते वै नदीतीरनिवासिनीं ततः पृच्छन् एका त्वं भो नवराज प्रिया कुतः ते पृष्ठा सा चारुनेत्रा कथयामास भारिकान् पत्न्यहं नवराजस्य परमः प्रीतिदायिनी गोमया पतिमाता च गच्छामो यत्र मत प्रभु गोमया पतिमाता च गच्छामो यत्र मत प्रभु
तस्या तद्वचनं श्रुत्वा भटास्ते हर्षसंयुता दोलायां स्थापयित्वा तां प्रेषयामाशुरार्जिताः तैर्भारवाहकैः सर्वैर्दोलानीता नदीतटे अप्सरोभिः कृतं तत्र ददृशुस्ते व्रतोत्तमं तद्दृष्ट्वा भारिका सर्वे तामाश्वस्य गतास्ततः यत्राप्सरो गणैर्सर्वे स्वस्थानि व्रतमादृतं भारिका ऊचु भो भो दिव्य किमेतद्वै क्रियते व्रतमुत्तमम् अप्सरस ऊचु स्वस्थानि व्रतमेतद्धि सर्वकामफलप्रदम् एतद् व्रतप्रभावेण स्वर्गलोके महीयते इति श्रुत्वा भारिकास्ते पुष्पादीनि प्रयाच्च वै अप्सरोभिः सहैवात्र स्वस्थान्यश्चक्रिरे व्रतं पुनस्तत्र समायाता यत्र सा भोगिनी स्थिता ततोऽतीव प्रक्रुद्धासीद् विलम्बेन च सा प्रिया ततोऽतीव प्रक्रुद्धासीद् विलम्बेन च सा प्रिया सा भूपतिलकान् दृष्ट्वा भारवाहान् मुदान्वितान् सपुष्पफलहस्ताब्जान् नाहतान् पापिनी वधू भारवाह विलम्बो हि युष्माभिः क्रियते कुतः इति श्रुत्वा भारवाह विज्ञप्तिं चक्रिरे मुदा अप्सरोभिः कृतं चैव नानाकामप्रदं शुभम् स्वस्थान्याश्च व्रतं दृष्ट्वा न श्रद्धा समजायत फलाभिलाषिभिश्चैव अस्माभिरपि तत्कृतं भवद्गर्थं पुष्पफलं समानेतं गृहाणभो एतद् श्रुत्वा बाहवाक्यां क्रुद्धातीवावदत्तदा स्वस्थाने कामयाद्यापि वेदे लोके च न श्रुता इति वज्रसमं वाक्यं मुक्त्वा सा पापिनी तदा तद्दत्त पुष्पफलयोश्चक्रे साक्षेपणं रुषा तस्यास्तत्कर्मदोलायां दृष्ट्वा संस्थाप्य पापिनीं निन्युर्मार्गेण त्वरया भारवाह भयान्विता अथ तत्र समायाता अल्पजला सुगमा नदी एतां हि पापिनी निन्युर्नदीं तरतुं यदा प्रिया तदा प्रलयवन्मेघा गर्जनं चक्रिरे प्रदा पपात वेगेन नदीमध्ये च पापिनी सादिष्टपापिनी जाता गलत्कुष्ठेन संयुता तद्व्रतस्य प्रभावेण वाहकास्ते दिवङ्गताः तदपापिनी स्पर्शभीत्या जलं पातालमाश्रितं संकटं कर्दमं तत्र दृश्यते पथिकै सदा तत्र 12 वर्षाणि कर्दमे पापिनी स्थिता ततो वंशादिविस्तद्धिर्शोधितं कर्दमं जनैः ततो वंशादिविस्तद्धि कर्दमं जनैः तदा वंशाग्रसंलग्न कृत्य पापिनी गता कुशस्थाने च पतिता संकटे दैवयो गता सर्वदा सा ज्वला बह्ने ज्वालया परिपीडिता ततः स नवराजो हि मातरं प्रति चोक्तवान् राजलक्ष्मीश्च सम्प्राप्ते यन्ते मातः प्रसादत सर्वदानं करिष्येतो ब्राह्मणेभ्यः श्रद्धया इत्युक्त्वा देशदेशाच्च ब्राह्मणा सन्निमन्त्रिता कपिल शिष्य संयुक्तस्तदुद्दिश्य जगामस मुनिना कपिलेनाधो दृष्टा सा पापिनी तदा मुनिना कपिलेनाधो दृष्टा सा पापिनी तदा मुनिना परिपृष्टा सा दग्धकाष्ठाकृतिर्वधू किं कुलं केन पापेन किञ्चिदृशी ते दशाधुना मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा पापिनी वाक्यमब्रवीत् जात्याहं ब्राह्मणी विप्र व्यवस्था व्रतनिन्दया क्षुधा मां बाधते विद्वन्
भुक्तसे समिहानय तेनैव मे क्षुधा शान्ति ऋतेभ्यं प्रार्थयाम्यहम्। ओमित्युक्त्वा गतो विप्रो नवराजनिवेशनं तत्र भुक्त्वा महद्भोज्यं दानानि प्राप्य वै तथा सर्वे द्विजागता गेहान् श्वान् श्वानेव मुदान्विता मुनिना याचितुं नैव शक्यते लज्जया तदा। तस्ततो भ्रमणं विप्रो नवराज नृपाङ्गणे मात्रा नृपस्य दृष्टः सा ततो जिज्ञासितो द्विजः नृपमात्रा मुनिपृष्ठ किं कार्यं भवतस्पृह तेन चोक्तं परार्थं च याच्यते भोज्यमात्रकं भाण्डारिका इति श्रुत्वा दातुं भाण्डागृहं ययुः पक्वान्नादि प्रपुढं तद् व्रतनिन्दा प्रभावत रिक्तं भाण्डगृहं जातं सर्वे दृष्ट्वा हि क्षत्रपाः नृपमात्रे परावृत्य ते वदन् सर्वमेव हि सोवाच तद्वचं श्रुत्वा दीयतां भोज्यमात्रकं तस्या तद्वचनं ज्ञात्वा कृतवन्तस्तथैव ते नूतने मृण्मये भाण्डे कृत्वा भोज्यं त्वरान्विता मुनिर्गतस्य पापेन युक्ता सा यत्र तिष्ठति। वैष्णव्योवाच स्वस्थाने परमेश्वर्या विधिवद् व्रतमाचर तेन स्वस्थानलाभास्ते भविष्यति न संशय। इत्युक्त्वान्तर्हिता देवी वैष्णवी कामरूपिणी तथा कृतं व्रतं सर्वं यथा दिव्या प्रभाषितं दध्यपूपे तथा देव्या यप्राप्ते व्रतकर्मणि शर्करायस्ततो पूपं नदीपङ्कस्य वै दधी कृत्वा समर्पितं बद्ध्वा तद्वयं सत्यतां गतम् अष्टपूपं ससूत्रादि नमस्कृत्य पुनः पुनः नद्यां क्षिप्तं तथा शीघ्रं तदस्पर्शं प्राप्य नागिनी अष्टोत्तरशतं वर्षं पुरुषेण विवर्जिता नागेन मिलिता या तद् ह्यपूपस्पर्शनादिभिः सर्वपापैर्विनिर्मुक्ता बहुवातीव सुन्दरी आशीषं च ददौ तस्यै नागकन्याति विस्मिता ततो बभूव सा पापा महालक्ष्मीस्वरूपिणी केनाप्यागत्य राज्ञेऽथ कथिता सुन्दरी कथा पथे कथ्य वच श्रुत्वा नुचरा प्रेषिता पुनः नानावाद्यादिघोषेण वेदघोषेण वै ततः स्वीये गृहे समायाता नवराजस्य भोगिनी गोमयायाः पदद्वन्नं सुन्दरी प्रणनाम सा मात्रा पत्न्या च संयुक्तो नवराजुनराधिप प्राप्तं निष्कण्टकं राज्यं बुभुजे सर्वसम्मतं स्वस्थानी परमेश्वर्या कथां श्रुत्वां च श्रद्धया अपुत्रा पुत्रमाप्नोति पत्युं प्रीतिं च विन्दति कथा श्रवणमात्रेण अयमेधः फलं लभेत् अपुत्रा पुत्रमाप्नोति पत्यु प्रीतिं च विन्दति कथा श्रवणमात्रेण अयमेधः फलं लभेत्। ओम संक्षिप्त स्वस्थानी व्रतकथा संपूर्णम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः ओम शान्तिः।